Okay, so this chapter is about salts and the identification of salt means the solubility of salt and all this stuff. So let's talk about the definition of salt. Okay, basically, a salt is formed whenever you replace the H positive of an acid with any metal ion. Okay, a salt is formed whenever the H positive of an acid is replaced with a metal ion. Let me just give you the example first. Let's suppose you have HCl. Let me just write it HCl. If you replace, yani if you remove this H positive and you add Na positive, अगर आप H positive replace करके उसकी जगह कोई metal ion place कर देंगे तो this become a salt. Let me just give you another example. If you have H2SO4 and you remove this H positive with, let's suppose, Mg2 plus ion, so it become MgSO4. This is a salt. Okay? Can I give you the definition? The definition is a salt is formed when the H positive ion of an acid is replaced by a metal ion. To give it a, so this is basically the definition of a salt. And all the chloride, bromide, iodide, for example, if you have metal chlorides, like you have KCl, NaCl, NaBr, okay, you have MgSO4, you have CaSO4, all these are basically the salt. Okay, clear? So when the H positive of an acid is replaced by any metal ion is basically called a salt. Okay, so all metal chlorides, metal sulfate, metal nitrate, metal phosphate, metal carbonates are salt. ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि all metal chlorides. क्लोराइड्स की जगह इफ आई यूज द टर्म हैलाइड देन इट इज ट्रू. हैलाइड का मतलब क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड सब आ सकते हैं. ठीक है, क्लियर? पर मेनली हम क्लोराइड की बात करते हैं. ऑल मेटल क्लोराइड्स, मेटल सल्फेट्स, मेटल नाइट्रेट्स, metal phosphate, and metal carbonates are salt. ठीक है बेटा, so they are basically salt. So if I give you any name like it is potassium phosphate or something else, then you can see you have phosphate with a metal ion, then it should be a salt. ठीक है, clear? So ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोराइड्स की. All chlorides, all metal chlorides are made from hydrochloric acid. ठीक है, क्लियर? यानी आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, HCl,
आप इसके H को किसी भी मेटल आयन से रिप्लेस कर देंगे तो इट बिकम अ सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, MgCl2, CaCl2। ठीक है, तो जितने भी मेटल क्लोराइड्स होंगे दे आर मेड फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड भी याद रखना आपको जरूरी है। इन अ सिमिलर वे ऑल मेटल सल्फेट्स आर मेड फ्रॉम, अब क्वाइट ऑब्वियस है कि सल्फ्यूरिक एसिड से बने होंगे। ठीक है, ठीक बेटा। सो यू हैव ऑल मेटल सल्फेट salts आर मेड फ्रॉम, यूजुअली आर मेड फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, वो आपसे पूछ सकता है कि कौन से एसिड से ये वाला सॉल्ट बनेगा। ठीक है, तो इफ यू हैव H2SO4 and you replace these hydrogen with any metal ion, it will become a salt, जैसे MgSO4, Na2SO4, so all metal sulfates. CuSO4, it could be a transition metal as well. ठीक है, in a similar way all nitrates are made from nitric acids. ठीक है, तो जितने भी मेटल नाइट्रेट सॉल्ट हैं they all are made from nitric acid. So nitric acid, the formula is HNO3. When you replace this hydrogen with any metal ion like Na, so it becomes NaNO3, sodium nitrate, KNO3, potassium nitrate, MgNO3, ठीक है, magnesium nitrate, and so on. Clear? And you can also have CuNO3, copper nitrate. सही है बेटा। तो नाइट्रेट पे आर बेसिकली जो क्लोराइड होते हैं दे आर Cl नेगेटिव। सही है, जो सल्फेट होते हैं वो SO4 2 माइनस, और जो नाइट्रेट होते हैं दैट्स बेसिकली NO3 नेगेटिव। सही है, सो दीज आर द आयंस दैट आर प्रेजेंट इन दीज। नाउ द नेक्स्ट वन इज all phosphates are made from phosphoric acid। ठीक है, तो जितने भी मेटल फॉस्फेट होंगे दे आर सॉल्ट एज वेल and they are usually made from phosphoric acid. Let's suppose you have phosphoric acid is H3PO4. If you replace these three hydrogens with metal, let's say Na3PO4, sodium phosphate, Mg, sodium phosphate, Mg के साथ 3 लगेगा, PO4 के साथ 2 लगेगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम फॉस्फेट, these are basically the phosphate made from phosphate. The iron phosphate is PO4 with a charge of 3 minus. ठीक है, and the last one is all metal carbonates are made from carbonic acid। ठीक है, कार्बोनिक एसिड हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इट इज अ वीक एसिड, सो दे आर मेड फ्रॉम कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड इज H2CO3। So when you place these two hydrogens with any metal ion, so it become carbonate, Na2CO3, MgCO3, CuCO3। ठीक है, carbonate is CO3 2 minus, so this is a carbonate ion। ठीक है बेटा, so these are basically all the salt। मैं थोड़ा सा डिटेल में इसलिए करवा रहा हूँ कि make sure that you know the basic concept of these metals, किस तरह से ये फॉर्म होते हैं। सही है, so they are made from acids, all chlorides are made from hydrochloric acid, all metal sulfates are made from sulfuric acid, all
Nitrate salts are made from nitric acid, all phosphate salts are made from phosphoric acid, all carbonates salts are made from carbonic acid. Carbonic acid is H2CO3. ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक की बात आप लोगों को ऑलरेडी पता भी होगी, एंड मेक श्योर दैट स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको ये सारी चीजें अच्छे तरीके से याद. Preparation of salt, like the basic reaction by which the salt is formed, is quite clear. Like you have to make acid to react with metal oxide, or metal hydroxide, then you can get the salt. Let's suppose if you have HCl, you react with sodium or magnesium, it will give you the sodium chloride or magnesium chloride. ये हम सारे reactions पहले से पढ़कर आ चुके हैं, ठीक है. एंड देन चलो एक दफा उनको लिख लेते हैं. और आई होप दीज नोट्स आर ऑल क्लियर. लिख लिया होंगे आप लोगों ने. सही है बच्चों. चलो आगे चलते हैं और नोट करके हम एक बार और लिखते हैं. A salt is formed by the reaction of acids with metals, metal oxides, or metal hydroxides. ठीक है, clear. A salt is formed by the reaction of metal with acid, metal oxide with acid, or metal hydroxide with acid. सारे reactions आप करके आ चुके हैं. So I'm just giving you one example of each, and then you're done with it. हम अभी last chapter में हमने ये सारे reactions किए हैं. Let's suppose you have metal like sodium reacting with HCl, then it will form sodium chloride, which is a salt, plus it will give you the half moles of hydrogen gas as well. ठीक है, this is aqueous and this is aqueous as well. So you can see a metal reacting with acid giving you a salt. In a similar way, अगर आपको sulfate salt चाहिए, let's suppose you have a magnesium in a solid form, you're reacting with H2SO4 aqueous, it will give you magnesium sulfate MgSO4 plus hydrogen gas. ठीक है बेटा. सो ये मैं इसलिए आपको बहुत स्लो करवा रहा हूँ ताकि मेक श्योर दैट यू नो दिस रिएक्शन, बट मेक श्योर कि आपको ये अच्छे तरीके से याद हो जाए. सो दिस इज अ रिएक्शन ऑफ मेटल्स with acid. Metals plus acid. In a similar way, if you have metal oxide, like if you have MgO reacting with H2SO4, it will give you the same salt, MgSO4 plus hydrogen gas. ठीक है. Let's suppose if you have sodium oxide reacting with HCl, it will form sodium chloride plus H2O. सही बेटा. And these are the reaction in which you have metal oxide reacting with acid. In a similar way, last कौन सा था? Metal hydroxide. So if you have sodium hydroxide plus HCl, पढ़ चुके हैं हम. If you have calcium hydroxide plus H2SO4, they are forming salt and water. So this is sodium chloride plus H2O. This is calcium sulfate plus H2O. ठीक है. So these are basically the reaction of metal hydroxide plus acid. ठीक है. State symbol लिख लीजिए. They all are aqueous.
ठीक है बेटा, so these are the basic main reactions. There are so many other ways of making salt. You can make salt by metal displacement reaction or be indirect reactions हैं by which you can make salt. But this is basically, these are basically the main reaction by which the salt can be formed by the direct reaction of acid with metal, metal oxide, metal hydro ऑक्साइड। अब चूंकि यहाँ पे हमने कार्बोनेट को भी सॉल्ट्स की कैटेगरी में रखा है, इसलिए मैं मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन एसिड के साथ नहीं करवा रहा। ऑल्दो उसमें जो है वो आपके पास नहीं, इसमें मेटल ऑक्साइड बन रहा है। यस, तो दीज आर, अगर आप कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो यू विल गेट दिस दी सॉल्ट। सो यस, हम सब ये ऑलरेडी जानते थे। लेट्स मूव टुवर्ड्स द मेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। नॉर्मली बच्चों को इशू होता है, लेकिन हम बहुत आसानी से ये बात याद कर सकते हैं, विच इज अबाउट द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स। सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं जनाब, soluble salts। soluble salts का मतलब those are soluble in water। और यहां पे लिख रहा हूं मैं insoluble salt। यहाँ एक बात you should all know about this, वो ये कि technically speaking no salt is insoluble in water, ठीक है, because they are ionic compound and the main property of the ionic compound is basically that the ionic compound are soluble in water। Why we say कि those salts that are very less soluble हम उन्हें insoluble कह देते हैं। जो salt कम soluble होते हैं, sparingly soluble होते हैं, partially soluble होते हैं, we call them a insoluble salt। तो ये बात याद रखिएगा कि technically the term insoluble incorrect, we can either use the term partially soluble or sparingly soluble, लेकिन यहाँ O levels में insoluble की term ही use होती है। तो the first one is quite easy, सबसे आसान है, और वो ये है कि all nitrates are soluble। सारे के सारे नाइट्रेट soluble होते हैं। ये तो बात ही खत्म हो गई, नो एक्सेप्शन नथिंग एल्स, ठीक है, क्लियर। दूसरी बात जो कि और आसान है, all chlorides are soluble, ठीक है। इसमें कुछ एक दो एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्ट द क्लोराइड ऑफ सिल्वर, लेड एंड मर्करी, ठीक है। सो द क्लोराइड सिल्वर, lead PbCl2 and mercury HgCl2, they are basically insoluble। तो मैंने यहां लिख दिया except these chloride, ठीक है। there are only three chlorides, those are insoluble, clear। all chlorides are soluble except silver, lead silver and mercury, ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं, all sulfates are soluble except few of them, एक्सेप्ट लेड यहां भी आएगा, इसलिए आपको याद रखने में आसानी होगी, एक्सेप्ट बेरियम सल्फेट, लेड सल्फेट। तो अगर वो आपसे पूछेगा व्हाट इज द मेटल जिसका क्लोराइड और सल्फेट दोनों इनसॉल्युबल होते हैं, तो आंसर इज लेड, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। एंड कैल्शियम सल्फेट, दे आर इनसॉल्युबल, ठीक है, क्लियर। तो द क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ लेड पीबी इज इनसॉल्युबल, ठीक है, क्लियर। इसके सिर्फ नाइट्रेट सॉल्युबल होते हैं, क्लियर। ऑल कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल। मैं स्लो इसलिए चल रहा हूं ताकि आप लोगों को साथ साथ याद हो जाए। एक्सेप्ट ग्रुप वन कार्बोनेट,
एक्सेप्ट अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है, सिर्फ ये आपके पास जो है वो सॉलिड। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यू हैव लाइक K2CO3, Na2CO3, NH4CO3, इसके साथ 2 लगाना पड़ेगा। दे आर बेसिकली द सॉलेबल कार्बोनेट्स। ठीक है, बाकी सारे के सारे कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल। So all nitrates are soluble, all chlorides are soluble except silver, copper, silver, lead and mercury. All sulfates are soluble, ठीक है, except barium, lead and calcium sulfate. ये याद रखने वाली चीज है। तो आपको कितना टाइम लगेगा बेटा इसको याद करने में? जस्ट टेक योर टाइम एंड मेमोराइज इट। ठीक है, ठीक है बेटा, लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ मैं एक छोटी सी चीज आपको और कवर कराऊंगा, व्हिच इज द सॉल्ट्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल। सॉल्ट ऑफ सॉल्ट्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी ट्रांजिशन मेटल्स के ऊपर। They are slightly different from other metals. They have the physical properties more or less the same as the other metals. But if you look at the periodic table, if I sketch periodic tables, and it is something like this. You have area between group 3 and group 2, and this area is basically of transition metals. Okay. Okay. So this is the region where you find the transition metals in a periodic table. Okay. They are also called D block elements. The most common transition metals we know are basically iron, copper. You can have chromium, cobalt, manganese, you have vanadium, and you have nickel. Okay, these are the most common transition metal we normally use in our and their chemicals we normally use. Okay, clear? So transition metals are slightly different from other metals. The first point लिखेंगे transition metals are different from other metals as they have different physical properties। ठीक है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। जैसे नंबर 1, दे हैव अ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वी नो अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? जैसे इफ यू हैव कॉपर, you have two type of oxide of copper, CuO, Cu2O. In this one, copper has oxidation state of +2. In this one, copper have oxidation state of +1. So they form a compound with a variable oxidation state. They form colored compound. Normally, the transition metal compounds are colored. ठीक है? And the third property, transition metals and their compounds are good catalyst.
due to their variable oxidation state. ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स की वजह से दे आर गुड कैटलिस्ट. ठीक है. क्लियर. अब यहां मैंने क्यों बात की है, वजह यह है कि द सॉल्ट्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर कलर्ड. द सॉल्ट्स ऑफ transition metals are colored. ठीक है. जैसे if you have CuSO4 then this is blue solution. अगर ये aqueous होगा तो this is a blue solution. ठीक है. In a similar way, if you have FeSO4 aqueous, this is a yellow green solution. ठीक है. आप सिर्फ green भी लिख सकते हैं. So the salt of transition metals have a special property that they have a variable oxidation state and they make a colored solution. Normally, when you write the salt of transition metal, you write their name as copper 2 sulfate. ठीक है. जैसे CuSO4. यहाँ पर ये जो कॉपर 2 है, दिस इज बेसिकली द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर. जब भी आप किसी ट्रांजिशन मेटल के सॉल्ट को लिखेंगे, आप उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को ब्रैकेट में इस तरह से लिखेंगे. ठीक है, क्लियर. So that's why these are so if they ask you what are the different properties of the salt of transition metals, so the main property, they have a variable oxidation state, the same ion with a different oxidation state, and they form a colored salt. ठीक है. इनके कलर आगे जाकर आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे. ठीक है, क्लियर. इफ यू हैव कॉपर 2 ऑक्साइड तो उसका फॉर्मूला होगा CuO. इफ यू हैव कॉपर 1 ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होगा Cu2O. ठीक है. तो दिस इज अ लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट द ट्रांजिशन मेटल्स. सो यहां से हमने स्टार्ट किया. हमने कहा कि यस, all this middle D block elements are the transition metals. The more common examples are iron, copper, chromium, cobalt, manganese, vanadium, nickel. Transition metals are different from other metals as they have a different physical properties. Physical properties, तीन physical properties different होती हैं. They are variable oxidation state, like 1 plus 2 plus दोनों हो सकती हैं. They form a colored compound. Normally their salts are colored. Transition metals and their compounds are good catalysts, and due to their variable oxidation state, the salt of transition metals are colored. जैसे copper sulfate is a blue color, iron sulfate जिसमें iron 2 plus aqueous होता है, yellow green solution है. Whenever you write the name of a transition metal salt, you write their name, their oxidation state in a Roman in a bracket. जैसे copper 2 sulfate, iron 2 sulfate, iron 1 oxide, copper 2 oxide, copper 1 oxide. So these are the numbers written in a Roman like 1 or 2. They are basically their oxidation state. ठीक है, clear. So we started salt from here, and we say that salt is formed when the H positive of an acid is replaced by a metal ion. So all chlorides, all sulfate, all nitrate, all phosphate, all carbonates are metal carbonates are basically salt. ठीक है. A metal chloride is formed when the hydrochloric acid is reacting with the either metal oxide or metal hydroxide. So all metal chlorides are salt, or metal sulfates are salt, all metal nitrates are salt, all metal phosphate made from phosphoric acid are salt, all metal carbonate made from carbonic acid are salt. ठीक है. In a similar way, these are the three main reactions by which the salt is formed: by the reaction of an acid with metal oxide, acid with metal hydroxide. These are the repeated reactions we have done in the previous topic as well.
this is the main topic for today's class, which is the solubility of salt. You should know that all nitrates are are soluble, all chlorides are soluble except silver, lead, and mercury. All sulfates are soluble except barium, lead, and calcium. All carbonate are insoluble except group 1 carbonate like potassium carbonate, sodium carbonate एंड अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। वो आपको ऑप्शन देगा, द क्वेश्चन इज अबाउट माय लाइक द प्रिपरेशन ऑफ अ सॉल्ट, और वो आपसे पूछेगा कि विच सॉल्ट इज सॉल्युबल, तो आपको पिक करना चाहिए। ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक विच विल बी मूविंग टूवर्ड्स इज बेसिकली द प्रिपरेशन ऑफ अ सॉल्ट। on उस preparation के लिए you all should know that the salt you are going to prepare is either a soluble salt or insoluble salt, and is it made from a soluble reactant or an insoluble reactant? So solubility is very important. ठीक है, अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। Then I give you the little introduction about the transition metals, their different properties। periodic table में दोबारा से होगा, लेकिन periodic table वाला जो chapter है वह on and off पूरे कोर्स में डिफरेंट एरियाज में आपको करवाता हूँ। तो टेक्निकली आई एम नॉट डूइंग द पीरियोडिक टेबल एज अ एंटायर चैप्टर। हमने मेटल्स की प्रॉपर्टीज देख ली हैं मेटालिक बॉन्डिंग में, हमने ट्रांजिशन मेटल्स की प्रॉपर्टीज यहाँ देख ली हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स में हमने थोड़ी सी नॉन मेटल्स की बात कर ली है। तो ऑलमोस्ट वो कहीं ना कहीं कवर अप हो जाता है। व्हेन द टाइम्स कम फॉर द पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर को, तो मैं आपको बताऊंगा कि वी ऑलमोस्ट डन ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दैट चैप्टर। ठीक है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज। आई एम जस्ट कीपिंग इट टिल हेयर फॉर टुडेज क्लास, सो मेक श्योर दैट यू रिवाइज एसिड, bases and salt. ठीक है, and make sure that you revise the previous topic as well. Soon, I'll be sharing the schedule, the topic for the midterm exam. We will be having a midterm in the last week of December, inshallah. ठीक है, आफ्टर 20th के बाद हमारा मिड टर्म हो जाएगा किसी भी दिन। ठीक है। सो दे विल सेपरेट पेपर फॉर P1 and P2, so I'll share all those topics that are coming in a midterm, so make sure that you revise the previous topic for your midterm exam last week of दिसंबर में आफ्टर 20th। वो शेड्यूल आपको अकेडमी की तरफ से मिल जाएगा, या फिर वो शेड्यूल मैं आपको खुद से शेयर कर दूंगा फॉर बोथ कैंपसेस। ठीक है। आई एम जस्ट कीपिंग इट टिल हियर, अ स्लाइटली शॉर्टर क्लास फॉर टुडे। Next is the preparation of salt, and then we will be done with this chapter as well.